नमस्कार, न्यूज पोर्टल टूथविंग पर आपका स्वागत है। सुपर 30 के जनक अभ्यानंद, जो कि बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में रहे छात्र छात्राएं जेई एडवांस और मेंस क्वालिफाई कर IIT और NITs में प्रवेश पाने में सफल हुए। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर सुपर 30 के जनक अभ्यानंद ने बिहार से और बिहार के बाहर के बच्चों के लिए मेडिकल में प्रवेश दिलाने के लिए नीट परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो अभ्यानंद सुपर 30 के माध्यम से फ्री में पठन पाठन, आवासन और भोजन की व्यवस्था होता है। आज हम ऐसे ही एक पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के एक छात्र अद्या दास की बात करने जा रहे हैं। अद्या दास की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट जैसी परीक्षा की तैयारी कर सके, लेकिन वह अभ्यानंद सुपर 30 में प्रवेश पाने में सफल हुआ। वहाँ उसने 2 साल तक रहकर पढ़ाई की। आज वह पश्चिम बंगाल कलकत्ता स्थित नील रतन सिल्कर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। आइए सुनते हैं अद्या दास की कहानी उन्हीं की जुबानी। I am Orgo Das, presently pursuing my MBBS from Neelratan Sircar Medical College, Kolkata. I am basically a resident of Uttar Dinajpur district, residing the borders of Bihar and West Bengal. I completed my 10th from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Uttar Dinajpur, and my economic conditions were not enough for admitting me in the private institutes that gave coaching for the NEET. Then one day, through a newspaper article, I came to know about the Abhyanand Super 30 and their initiative for giving educations at a free of cost to the economically weaker sections of the society. The article motivated me to appear in the exam, and ultimately I got selected. And institute helped me in fulfilling my dreams to become a medico. Their unlimited attentions and my hard work led me to clear my NEET in my first go. Abhyanand Super 30 basically focuses on the self-study mode, which not only helped us in our prep times but also in the college times. It's a different institute from any other coaching centers in India. The most valuable and the important asset of Abhyanand Super 30 is the guidance of our Abhyanand sir. He basically taught us how to approach a question in the exam of a question paper. He also taught us how to manage time during the exams, which helped us during the NEET as well as in the other competitive exams. Abhyanand sir also have a close watch on the performance of all the students of Abhyanand Super 30 and the growth rate of the students, which helped us, and Abhyanand sir used to give us advice in faculties of physics, chemistry and biology were also very helpful. They taught us and they cleared our doubt whenever we approached them. The doubt clearing sessions effectively helped us in improving our concepts. I am very grateful that I am a part of such an institute. Super 30 helped me in fulfilling my dream to become a medico. So I am very grateful towards the full unit of Abhyanand Super 30. Abhyanand Super 30 has a great hand in making me a medico. So once again, I, from the core of my heart, thank to the whole unit of Abhyanand Super 30. इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।